So I think finally we are live. First of all, I would like to pay a beautiful thanks to all participants for joining us. Before I start, just want to confirm that my voice is clear with you all. Just put some comment. Right now we are live. गुड इवनिंग है जी, सभी को नमस्ते है, गुड इवनिंग है। जिस भी अभिवादन का शब्द आप स्वीकार करते हैं मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत वेल विशेज हैं। आइए हम लोग अपनी बात को शुरू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंफर्म दैट माय वॉइस इज क्लियर विद यू ऑल। यहाँ पे काफी लोग जुड़े हैं। निधि नरूला जी गुड इवनिंग है जी। प्रणाली हमारे साथ कनेक्ट हैं। वनीश कुमार जी हमारे साथ कनेक्ट हैं। क्रिएटिव किड्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, हेलो। रे हमारे साथ में है। राघवेंद्र जी हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, आपका भी वेलकम है। इसी के साथ मिनल जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी वेलकम है। श्रीकांत शर्मा जी रेगुलर व्यूवर हैं, काफी कमेंट करते हैं, सभी का स्वागत है। मनीष शर्मा जी आपका भी वेलकम है। अनुष्का शर्मा आपका भी स्वागत है। अनुष्का शर्मा था, ये काफी अच्छा नाम है, अनुष्का, गुड। आंचल कुमारी जी ड्रामा क्वीन, ये रेगुलर व्यूवर हैं। निधि का कमेंट आ गया है, यस योर वॉइस इज क्लियर, यस राइट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग है जी, गुड इवनिंग है सभी को, गुड इवनिंग है जी। हाँ जी हाँ, आवाज क्लियर है। वीडियो थोड़ा सा अलग है, आजकल इंटरनेट की सुविधा में थोड़ा सा ग्लिचेज है, बट हमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। माय नेम इज राज आलमपुर और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। रोहतक हरियाणा शहर में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पिछले 8 साल से मैं काम करता हूँ और भारत के अभी तक 17 राज्यों में मुझे जाने का अवसर मिला है। मैं हरियाणा गवर्नमेंट के साथ फैमिली कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर एज ए जनरल काउंसलर काम करता हूं और इसके अलावा मैं रोहतक के पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हूं। इससे भी अच्छी बात यह है कि मैं भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के साथ भी पिछले 7 साल से काम कर रहा हूं। और इन सब से भी बेहतरीन बात यह है कि हम लोग पर्सनालिटी केयर फाउंडेशन को रन करते हैं, एक ऐसी संस्था जो आपकी लाइफ, साइकोलॉजी और दूसरे विषयों में आपके ऊपर अलग अलग वेबिनार्स को लेके आपके सामने आती है। आपको जान के अच्छा लगेगा, सारे के सारे वेबिनार्स बिल्कुल फ्री रहते हैं। इससे भी बेहतरीन बात, इस वेबिनार के लास्ट में जो भी लोग अपना सर्टिफिकेशन चाहते हैं तो उन सभी को एक सर्टिफिकेट आने वाले 7 दिन में, वर्किंग डेज में रिसीव हो जाता है। कई लोगों को कई बार ऐसी इंक्वायरी रहती है कि उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो वो लोग अपना हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन से लेके अप्लाई कर सकते हैं, वहां से व्हाट्सएप के माध्यम से चैट कर सकते हैं। आज हम एक और इसी बेहतरीन फ्री वेबिनार की श्रृंखला में आपके साथ में कनेक्ट हो गए हैं। आज का टॉपिक आप सब जानते ही हैं कि सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, दैट इज आज तक की सबसे लेटेस्ट, सबसे बेहतरीन और बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यू में काम आने वाली थेरेपी है। जितना ज्यादा आज का बेहतरीन टॉपिक है, उससे ज्यादा बेहतरीन हमारे रिसोर्स पर्सन हैं। जब तक हमारे साथी कनेक्ट हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि पर्सनालिटी केयर फाउंडेशन की जो ये संस्था है, ये ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वेबिनार्स प्रोवाइड करती है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी फ्री मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी वेबिनार पहले के हो चुके हैं, आप उनका भी यदि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल जर्नी में या आपको दूसरे तरीके से पर्सनल लाइफ में हेल्प मिलती है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। Can you please continue in the conversation in English? Yes, actually the session will be bilingual, just because of सारे एरिया के लोग हैं, तो हम लोग मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आप इस चीज को थोड़ा सा समझ पाएंगे। इधर के कुछ लोग हैं जिनको इंग्लिश में इशू है एंड उधर के कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा हिंदी में है, तो हम मिक्स करने की ट्राई कर रहे हैं। तो आइए, मैं आपको ऐड कर रहा था कि जो भी साथी इस वेबिनार को अटेंड करते हैं, इसके लास्ट में एक वेबिनार के डिस्क्रिप्शन के, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सर्टिफिकेट का लिंक मिलेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग पुराने भी वेबिनार देख सकते हैं। किसी साथी को ऐसा लगता है कि हमें पर्सनैलिटी केयर फाउंडेशन जो एक इस तरीके की संस्था है कि हम इसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम कुछ डोनेट कर सकते हैं, तो आप सेम डिस्क्रिप्शन से जाके आप कुछ भी अमाउंट हमें पे कर सकते हैं, जिससे हम और बेहतरीन रिसोर्स पर्सन तक और दूसरी अच्छी टेक्नोलॉजिकल चीज़ों तक हम पहुंच पाएँ और आपको और अच्छा कंटेंट हम लोग डिलीवर कर पाएँ।
आइए अब हम आज के इस वेबिनार पे बातचीत करते हैं। आज का ये जो टॉपिक है दैट इज़ सीबीटी। हमारे लिए आज बहुत ही बेहतरीन बात है कि हमारे बीच में आज के रिसोर्स पर्सन कनेक्ट हो गए हैं। मैं सबसे पहले तो जब तक हमारे रिसोर्स पर्सन के बारे में बताऊँ तब तक मैं सभी साथियों से चाहूँगा कि वो एक प्यारा-सा वेलकम उनके लिए लिखेंगे। सबसे पहले मैं अपनी बात को शुरू करूँ, मैं कुछ भी बोलने से पहले आज के हमारे रिसोर्स पर्सन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रिया भाटिया मैम, पर्सनैलिटी केयर फाउंडेशन की पूरी टीम आपका बहुत स्वागत करती है मैम। आप रिया भाटिया मैम हैं, आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं एंड यू आर प्रैक्टिसिंग इन गुड़गांव सिटी इन हरियाणा। Basically, you have experience of more than 2 years in the field, and Ria Bhatia ma'am did his MPhil in clinical psychology from MIT University, and she is RCI clinical psychologist, RCI licensed, and some of the services provided by the Ria Bhatia ma'am is client-centered therapy, that is CBT, and trauma trauma therapies, grief therapies, stress management, couple therapies, and family therapies, hypnotherapy, very good. That is work life balance counseling, and basically the area of specialization of Ria Bhatia ma'am is anxiety, depression, OCD, grief, trauma, self esteem, and stress relationship, and a lot of a good line in the same सर्विसेज। सो मैम आपका मैं बहुत बहुत सबसे पहले तो स्वागत करता हूँ। हमारी पूरी ऑडियंस आपका वेलकम करने के लिए अपने कमेंट के माध्यम से बेसब्री से इंतजार कर रही है। मैं हमारी ऑडियंस और आप दोनों के बीच में अभी होस्ट का काम कर रहा हूँ। तो आइए अब हम हमारी आगे की बातचीत शुरू करेंगे। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाउ इट्स ओवर टू यू मैम। Thank you, thank you. Firstly, I would like to thank Personality Care Foundation for organizing this webinar today. Thank you so much. Um, जैसे कि हमें पता है आज का टॉपिक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है जो अभी बहुत पॉपुलर हुआ है। So before I start, so I will just tell you what all topics I will cover today. So pehle I will talk about a little bit of introduction, then cognitive model जिस पे ये therapy based है, then उसके principles क्या हैं, assumptions क्या हैं, indications and contraindications, and lastly I will discuss certain techniques of CBT. So let's start. I think everyone can hear me and my slides are also visible. यस मैम, ऑल विजिबल एंड आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। नाउ प्लीज प्रोसीड। Okay, I'll start with the webinar today. So basically, CBT was started by Aaron Beck, and this was in the early 1960s, and he termed it as cognitive therapy. So now, what has been done is what cognitive therapy has been retermed as cognitive behavioral therapy, and it is widely used in our field today. So, it is a structured, short term, and present oriented therapy, and it is majorly directed towards solving the current problems. And how do they do that? By modifying dysfunctional thinking and behavior of the patients. So, CBT has been adapted to a diverse set of populations and different disorders. So, that is why it has gained so much popularity nowadays because अलग अलग populations, अलग अलग disorders, अलग अलग issues पे ये apply करा जा रहा है. So, when Beck started the model, it was based on basically cognitive formulation. So, usme he focused on the thinking, beliefs, and behavior of his patients of a specific disorder. So, in this, the therapists basically they focus on producing a cognitive change. Cognition basically हमारी thinking होती है, thoughts which affect our other areas of our functioning. So, major focus of cognitive behavioral therapy is to produce a cognitive change.
So, in that, the patient's thinking and belief systems are targeted to bring about a change in their emotions and their behavior. So, CBT has been adapted to different patients with diverse levels of education, income, different culture, different ages, from young children to older adults. But one prerequisite is that certain level of education is required in the patients, in the clients, for them to understand what the cognitive model is. It has also been adapted to different fields like primary care, medical offices. It's used in schools, vocational programs, prisons, and different settings. And it can be used in different formats. So, individual therapy में तो यूज होता ही है, ग्रुप थेरेपी में भी अप्लाई कर सकते हैं, कपल थेरेपी में भी, फैमिली थेरेपी में भी. So, the cognitive model has been adapted to different formats. So, this cognitive model, it proposes that the dysfunctional thinking, so basically which influences the patient's moods and behavior, it is common to all disturbances, all issues, all disorders. So, when the patient learns to evaluate his thinking in a more realistic and adaptive way, then there is an improvement in their emotional state also and in their behavior also. So I would like to give an example. So example से क्या होता है, I usually do this with my patients also. Giving example से उनको भी better समझ आता है and they can relate more. So if you fail in your exam, for example, so that is a situation or a stressor that you face. So what happens is, when the situation occurs, we have an automatic thought. Automatic thought is basically, it is like a pop up message कि वो कहीं से भी pop हो जाता है. There is no stop button, you cannot stop it. So that automatic thought can be कि I can't do anything right. ठीक है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकता. And result of that thought is that we feel sad and depressed. So that is our emotional component. Then when we feel these emotions, when we are feeling sad, then what do? That is, we retreat to bed, we lay down in bed all day, उठने का मन नहीं करता, मतलब आलस आता है, मन अच्छा नहीं लगता. So that is our behavior. So this has basically what is the distortion. I will talk about this ahead, but basically क्या होता है कि हम एक situation को over generalize करते हैं कि if I fail in one exam, मतलब मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता. Maybe the student is good in other things, sports, arts, but because he has failed in one exam, then he thinks that मैं कुछ भी नहीं कर सकता. So now I will be talking more about the cognitive model. So it basically describes how people's thoughts, that is their cognition, influence the way they feel, that is the emotion, and they behave. Okay, so this is the core of CBT and it helps in conceptualization of the client. Conceptualization मतलब कि understand कैसे करते हैं हम उसकी problem को. So this is the meaning of basically conceptualization of the client's difficulties. So there are three aspects of this. One is the automatic thought, one is the cognitive distortion, and the underlying belief and schemas. So this is basically a picture of the cognitive model. Like I mentioned पहले भी example में एक situation आती है that you fail in your exam. There is a automatic thought after that कि I can't do anything right. Then there is a reaction. Now reaction can be emotional, it can be a behavior, it can be physiological response. Many people experience पेन्स, एक्स, मतलब अगर डिप्रेशन का पेशेंट है फॉर एग्जांपल, तो बॉडी पेन हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है. एंजाइटी का पेशेंट है फॉर एग्जांपल, तो नर्वसनेस हो रहा है, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, फेंटिंग हो रही है.
So these are all physiological reactions या bodily responses. हमारी body भी react कर रही है इनसे. So first I'll be talking about automatic thoughts. They are basically immediate interpretation of the event. तो event हुआ, एग्जाम में फेल हुए, एंड immediate interpretation है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ. ठीक है. So they are referred to as automatic thoughts. So automatic thoughts basically shape both the individual's emotions and their actions in response to the event. सो सीबीटी में हम क्या करते हैं इज बेसिकली ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिसफंक्शनल ऑटोमेटिक थॉट्स. Okay, and usually what happens is they are exaggerated, they are distorted, they are mistaken, they are unrealistic in nature. So we try to identify it, observe it. So another example I will give. So if a friend crosses you in the market and doesn't say hello, आप जा रहे हैं और आपके फ्रेंड को आपने हेलो बोला, उसने रिप्लाई नहीं किया, वो चला गया. सो दो टाइप के सिचुएशन हो सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज कि योर ऑटोमेटिक थॉट इज दैट ही हेट्स मी, वो मेरे को पसंद नहीं करता, मैंने कुछ करा है जिससे वो मेरे से गुस्सा है, ही आई हैव डन समथिंग टू एंगर हिम. ऐसे अगर थॉट्स आएंगे ऑटोमेटिक थॉट्स, देन फिर उसका इमोशनल रिएक्शन क्या होगा कि यू विल फील अपसेट अबाउट इट. And then what will you do after that is you will avoid that friend. Next time वो कहीं आपको दिखे, आप मुंह मोड़ के चले जाओगे. You will avoid him, you will not talk to him whenever you meet him next. But in the other situation, okay, this is alternative thought. अगर if you think at that time कि नहीं, he must be in a hurry, okay, वो जल्दी जल्दी में उसने नहीं देखा होगा, if that thought comes to your mind, then you will not be concerned. There will be no major emotional reaction that will come. You will be like, okay, fine, theek hai. And behavior will be कि next time whenever you meet him, you will not avoid him, you will talk to him normally. So it will be a normal emotional reaction also and behavior also. So it all depends on what your automatic thought was. Second, secondly is cognitive distortions. So these are errors in our logic, and these are quite prevalent in different disorders. Okay, like they are erroneous conclusions that patients come up with. Like for example, in the previous example, I mentioned ki, he hates me. That is an error. Okay, so like that I have mentioned what are the common cognitive distortions that are prevalent. So first is dichotomous thinking. So things are seen as two mutually exclusive categories, and there is no shade of gray. It's either black or white. Either it is there or not there. Either I pass or I fail. There is no in between that the patient sees. Either I am perfect or I am a failure. So these are certain examples of them. Then overgeneralization, I had mentioned this earlier also. So taking isolated cases and using them to make wide generalization. For example, if I have failed in my maths exam, okay, baki mein I have scored well. But if I say that I'm a failure in life and I can't do anything good, then that is an over generalization. Okay, you're taking one thing and you're not seeing the other things. You may be good in sports, you may be good in arts, you may be good in anything else, but you are just focusing on one particular event. Then, third is selective abstraction, that is focusing exclusively on certain and usually or upsetting aspects of something and ignoring the rest. So, basically, the person focuses mainly on negative aspect and ignores anything positive. Then disqualification of the positive, it is related somewhere to selective abstraction only. So positive experiences that conflict with the individual's negative view are discounted. So if he thinks, for example, a bad something about himself and someone comes and compliments him, but he will ignore it.
फॉर एग्जाम्पल आई डोंट फील कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ एंड मैं किसी पार्टी में गई, आई गो टू सम पार्टी एंड समवन कम्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स मी। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि यू लुक वेरी नाइस टुडे, बट मुझे अब हो रहा है डाउट उस पर, सो आई विल इग्नोर द पॉजिटिव वॉट ही हैज सेड एंड इन माई माइंड आई विल थिंक कि नहीं, ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, ओके, ही इज मेकिंग फन ऑफ मी। So I will discount the positive and focus on the negative. Then mind reading, that is assuming the thoughts and intentions of others. This is actually very common nowadays. There has all this messages, text, social media has made all these things very much more common. Actually, we assume what the other person is saying. The communication has become very weak now. So instead of asking the other person ki why did you do this, for example, in the previous example, if I would have gone and asked my friend that why did you ignore me, वहीं पे मेरा डाउट क्लियर हो जाता, बट नहीं, आई विल अज्यूम कि he purposely ignored me, he doesn't like me, that is why. So when you assume things instead of clarifying or communicating, then you are mind reading. Then fortune telling, that is predicting how things will turn out before they happen. This is also very common कि मैं तो फेल ही होऊंगा, मैं चाहे जितनी भी पढ़ाई कर लूँ मैं फेल ही होऊंगा. So despite studying how much ever efforts I take, I will still fail my exam. So what happens is that time the motivation reduces, the person doesn't feel that confident, and वो results पे obviously reflect होगा, right? So we try to predict the future and act according to our prediction. Then minimization, this is also similar. Positive characteristics or experiences are treated as real but insignificant. So again, discounting the positive and focusing on the negative. Then catastrophizing, that is focusing on the worst possible outcome. This is also very common. Worst case scenario, many people just focus on that and go ahead and they behave in that way कि वो actually हो जाए, that actually happens. Okay, so thinking that the situation is unbearable or impossible and very uncomfortable, कि मैं ये सहन ही नहीं कर पाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई फेल माई एग्जाम, मैं सहन ही नहीं कर पाऊंगा. ओके, so worst case scenario that I will not be able to deal with it. So that is the meaning. Then next is emotional reasoning, that is making decisions and arguments based on how you feel rather than the objective reality. सो मैनी अ टाइम्स हम सुनते हैं ये चीज कि मुझे लगा ऐसे होगा. सो लगा मतलब आई फेल्ट कि ही विल डू दैट इंस्टेड ऑफ एक्चुअली फोकसिंग ऑन व्हाट एक्चुअली हैपेंड. Okay, when that in the example of the friend, agar if I feel that person is ignoring me, or if I feel that he doesn't like me, I will think of it in that way ki ha, he ignored me because he didn't like me, instead of focusing on objective reality, that is ki he was in a hurry. See, that is the objective reality, that he was in a hurry, he didn't see and he went. So, this is the difference between how you feel and what is the reality. Then, should statements, that is concentrating on what you think should or ought to be rather than what the actual situation is, or having rigid rules. I have to be, I should be perfect, I ought to be perfect, I must be perfect. These are should statements, they are extreme. Perfect matlab in all the areas. I should be perfect, I should get 100 on 100 in all my exams. So these are should statements. Then personalization, assuming you are completely or directly responsible for a negative outcome. मेरे वजह से ये हुआ है, I was responsible for it. If the person didn't talk to me, it is because of me only, I have done something wrong. So, taking the blame on yourself, then feeling guilty, taking the blame, feeling sad, upset. So, that is personalization. Then,
underlying beliefs usually shape our perception and interpretation of events. So different belief systems or schemas, they take a shape as we go through life experiences. So basically schemas are based on what we experience, are based on life experiences. So they are templates, rules for information processing that underlie the most superficial layer of automatic thoughts. So when that automatic thought occurs, then we focus on what is our previous experience, then we try to interpret it. So that is our schemas. So these beliefs are at two levels. One is core beliefs and one is intermediate beliefs. So core beliefs are absolute truths, just the way things are. They are central ideas about self and the world. They are the most fundamental level of belief. They are global, rigid, and overgeneralized. So, for example, I am unlovable. Okay, no one can love me. I don't deserve anyone. So, this is absolute truth. Again, black and white. I'm inadequate. The world is hostile. It is dangerous place. So these are very extreme truths, extreme beliefs that we have it in our head, and they lead to different thoughts, automatic thoughts. So when the situation comes, then our automatic thoughts are related to our core beliefs. Then second is intermediate beliefs. So they consist of assumptions, attitudes, rules, and they also influence in the development of core belief. So for example, to be accepted I should always please others. So it is like if I do something, then only I will get the desired results. I should be excellent at everything I do. It is best to have as little as possible to do with people. So these are our general assumptions in life जिससे हम यूजुअली अपनी लाइफ कैरी आउट करते हैं. Then I'll talk about cognitive triad. It is basically used in cases of depression, सबसे ज़्यादा. So there are three aspects of this. One is negative views about yourself. That is, I'm not good at doing anything. That is your self belief. So this usually leads to feelings of worthlessness. I am not good at anything, so I'm worthless. Then there is negative views about the world. Nobody likes or cares about what I do. Okay, so you feel helpless in that situation. So it leads to helplessness. Then negative views about the future, that I'm never going to be successful. Then what does that lead to? Hopelessness. So this is basically, it is majorly used in depression, but it can be applied to other disorders as well. Certain principles now, I'll be talking about CBT, that is focusing on our thoughts, emotions, and behaviors. So, how we think is how we feel, is how we act. So basically, it is based on the formulation of patient's problem and leads to individual conceptualization. That is basically understanding of the problem. It requires a sound therapeutic alliance. Then it emphasizes on collaboration and active participation by the patient. So there are a lot of techniques that require the patient's involvement. It is goal oriented, it is problem focused. It emphasizes on the present problem. Okay, a lot of past related issues may come up, but it is mainly how it is affecting the present. Okay, it is educative in nature. Then it is time limited. It is usually between 8 to 12 sessions, can be extended up to 15 to 20 sessions max. But it is structured and it is time limited, and it teaches the patients to identify, evaluate, and respond to their dysfunctional thoughts and beliefs. And there are a variety of techniques that are used. Then I'll be talking about certain assumptions. So it is insight oriented. Insight basically means that how much do the patients understand their problem? What is their view about their problem? Okay, so it is insight oriented, and it focuses on changing the unrealistic thought pattern. Then the goal is actually to help the clients learn practical skills.
to make changes in their thoughts that will affect their emotions, behavior. These are the primary focus. Then the client learns to identify their dysfunctional thinking, identify their cognitive distortion. It also focuses on weighing the evidence for and against. So whenever we ask the patient ki what is the evidence that, why did you think that your friend ignored you, didn't tell hi to you, what is the evidence for it, what is the evidence against it, so that evaluation comes. And like I mentioned, it focuses on present problems. Now, focusing on indications of CBT, basically indications का क्या मतलब होता है कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स या कौन कौन से डिसऑर्डर्स पे हम सीबीटी अप्लाई कर सकते हैं, वेयर ऑल इज इट यूजफुल. Okay, some of the positive things that we can go ahead with CBT. So we can use it in anxiety disorders. It is used in OCD, obsessive compulsive disorder. It is used in post traumatic stress disorder, eating disorders, majorly for depression, as it obviously was started with that. So, depression. Then it can be used with BPT patients, borderline personality disorder, substance abuse, chronic pain. It can also be used with schizophrenia patients, but with in line with the medication. Now, contraindications कि where the CBT will not work. Okay, कहाँ पे ये काम नहीं करेगी. So, in certain severe mood disorders, CBT will not work directly. But first, the patient will be given certain medication, and then probably you can start CBT with that. Certain severe personality disorders, it will not work. Severe to profound intellectual disabilities, it will not be very helpful. Although there was a recent research that, mild to moderate intellectual disabilities, there was a trial of CBT which was successful. So it is being adapted, to different disorders. So this is a table of certain, disorders where CBT can be used. So, majorly, I have mentioned before, but here's the list. You can go through it once. Do you have any questions? Anything I can take up before starting the techniques? Kuch anything anyone wants to contribute or ask? मैम Q1 ने हम लोग लास्ट में लेंगे, और आप ऑडियंस से मैं चाह रहा हूँ कि उनका फीडबैक वो लिख सकते हैं कि सेशन जी, उन्हें कैसा लग रहा है। जी, बेसिकली जी. वो बता सकते हैं, क्योंकि मैम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, और अच्छी बात है कि टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, इधर-उधर मतलब ट्रैक से नहीं हट रहे हैं। मतलब बेसिकली ये एक प्रोफ़ेशनल जैसे सिखाते हैं किसी को, उस तरीके से मैम बता रहे हैं। तो कैसा जी, जा रहा है जी. इनका सेशन? कुछ कमेंट आपके मिल जाएँ तो पता लगेगा। जी हाँ, यहाँ पे कुछ समाधान। जी, वेरी इन्फॉर्मेटिव। जी, जी, जी। जी, मैम काफ़ी Thank you. Thank इंटरैक्टिव है you. सेशन में, तो ऐसे टकटकी लगा के ऐसे सुन रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से। तो आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं, हम Okay. Q&A लास्ट में Okay. लेने वाले हैं। जी, प्लीज़ सर। Sure. So now I'll be talking about certain techniques that are mostly used in CBT. So first is psychoeducation. Psychoeducation is actually very important in any therapy that you do. So basically it is information about specific diagnosis. कि diagnosis क्या है? Depression, anxiety, phobia, obsessive compulsive disorder. Okay, we inform the patient about diagnosis, that is breaking the news. So explaining and reviewing the treatment options with them. What is the combination ki medicine ke साथ करना है therapy, explaining all of that with that. Then explaining psychological concept of the relation between thought, emotion, behavior, explaining the cognitive model, cognitive trial to them.
Then understanding their point of view, what is their expectation in therapy, what are they looking forward to, what are their goals, what are their fears, because obviously कोई भी therapy करने से पहले client has certain fears, certain assumptions, certain anything that in their mind, तो they can also share. It is always good कि हम अपने पेशेंट से पूछें कि उनके क्या बिलीव्स हैं, उनको एक्सप्लेन करें एट द स्टार्ट, so they will be more cooperative. So that is always important. Then major component or major technique that is used in CBT is cognitive restructuring. So this helps the client discover, challenge, modify, or replace their negative, irrational thoughts or cognitive distortions. So in this we follow certain steps. Okay, so first we tell them to maintain a thought record. Okay, तो वो जो thought record में क्या क्या करना है उनको उनको explain करते हैं. So first they have to identify the situation. क्या आप setting situation है. For example, they failed in their exam. Okay, then recording the thoughts after that situation has occurred. So these thoughts basically are the automatic thoughts that have come कि I am good for nothing. ठीक है, then they record their feelings. How do they feel sad, they feel upset, they feel guilty. How do they feel? Then what is their behavior after that? So what do? They don't go to school, they don't go to college, they don't go to work, they avoid talking to anyone, अपने आप को रूम में बंद कर लिया, खाते नहीं है, सोना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी. So all these are behavioral reactions. Then we evaluate those thoughts. So basically we identify कि कौन सा cognitive distortion है. From the list that I mentioned, you sit with the patient and identify. Personalization हो रहा है, dichotomous thinking हो रहा है, minimization, catastrophizing, overgeneralization, कौन सा cognitive distortion है. So we identify that. Then this is a very good technique. It is called Socrative questioning. So for example, we ask the patient कि is this thought realistic or it is unrealistic, आपको क्या लगता है. So is it based on facts या feeling? ये actual में हुआ, is it objective or it is based on आपको कैसा लगा? कि वो आपको लगा कि वो आपका फ्रेंड आपको देख के चला गया या वो एक्चुअली चला गया और वो एक्चुअली गुस्सा है. So what is the fact about it? Then what is the evidence of the thought for and against? Okay, for is कि the friend was actually angry with me and he ignored me. Against is again that he was in a hurry. That is why he went. So, asking for evidence, asking for facts, asking for reality, and trying to evaluate the thought. Then, the next step, when all these data is collected, then focusing on what can be an alternative thought. Alternative thought again वही कि अगर he ignored me, it is possible that he was in a hurry, that is why he ignored me. Okay, I failed in my exam, so I mustn't be well prepared for it. Okay, or maybe I got nervousness के वजह से मैं fail हो गया, या मैं बहुत ज़्यादा stress था, या मैंने पढ़ाई नहीं करी, या मैं बीमार था, तो क्या फैक्ट क्या है उसका. सो ऑल्टरनेटिव थॉट. देन फोकसिंग ऑन व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव इमोशन. तो अगर मैंने अभी उसका एविडेंस पूछ लिया कि ये मैं फेल हुआ एग्जाम में क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि मैं 1 महीने से बीमार हूँ, then you feel less guilty, you blame yourself less, you feel less sad, you are more relaxed. So emotions start changing. And then when emotions start changing, then obviously behavior will also change. You will go to school, you will go for tuition, you will get up, you will study harder. So these are alternative behaviors that come. So once the thought is changed, then the behavior, the emotions will automatically change. Then next is activity scheduling, or it is also called as behavioral activation. These are two terms.
दोनों interchangeably use होते हैं. So I have mentioned it is basically first used for treatment of depression. Okay, and it found positive results due to reinforcement that the patient got with increased social engagement and rewarding activities. So, what we do in activity scheduling is that we structure the patient's day, okay, according to the activities. So we make a list first of what the activities are avoided. For example, going to school, getting up from bed, having a bath. So all these activities are avoided, or any other thing. If the patient is good in sports, he has not gone for practice. So these are the things that are avoided. Okay, and then we structure those activities, and it is basically based on mastery and pleasure. तो मास्टरी मतलब कि पेशेंट जिस चीज में अच्छा है, व्हाट इज ही गुड इन, एंड प्लेजर इज बेसिकली what will bring out positive emotions, what will make the patient happy. If he likes to play football, then that will make him happy and he is good at it. So it involves both mastery and pleasure. Then they are encouraged to start the activity, and there are short term goals that are formed ki theek hai, you play first, for a short time, go for 15 minutes, 20 minutes, and then increasing it. देन वन मेजर मिस्टेक इज कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज दे रहे हैं. नाउ फॉर अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन, ही इज नॉट एबल टू गेट अप फ्रॉम बेड, एंड यू टेल हिम कि यू गो एंड स्टार्ट प्लेइंग फुटबॉल. दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. पहले उठे, डू सेल्फ केयर एक्टिविटीज, हैव अ bath, eat properly, sleep properly, first basic activities, and then going to more advanced activities. And they should not be filled with too many activities, because then patient will lose interest, lose motivation, feel more tired, and then wo therapy is not going to work. Okay, then individuals should also monitor the effect of those activities on their mood. So when they're doing it, how do they feel? So that pleasure component should be highlighted. Okay, and it should be in mind, keeping their goals and value directions in mind, ki what they want to improve, what they want to achieve. They are encouraged to note and assess ki how those avoided activities are usually used to avoid, and then they trigger those thoughts. So for example, if I am not getting up from the bed, so what thoughts are still going on कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, and then you feel more sad, more depressed. Okay, and we can use this, we can do this by using problem solving या role playing exercises. So trying to encourage them basically. Then fourth is behavioral experiments. So in behavioral experiment, the therapist and the client, they collaboratively test out key thoughts and beliefs that have previously identifying as a causal role in maintaining the distress. So sometimes, like I mentioned, ki assumptions बहुत हैं कि the friend ignored me because he doesn't like me. So what the patient does, he predicts that that friend is not going to talk, so he also avoids it. Okay, but we what do we do is that we note down ki what are the key predictions of those thoughts, what are the possible outcomes before testing the situation. Testing will be like going and asking the friend कि why did you ignore me, or what was the reason कि मुझे देख के हाय नहीं बोला. तो that is the experiment. But before that, we note down what the prediction was, what the outcome was. We do this before the experiment, we do the and do it after the experiment also, and then compare the two. So hypothesis A is basically कि he ignored me, he doesn't like me. And actually what happened is, after talking to the friend, that he didn't see you only. कि मैंने तो तुझे देखा ही नहीं, इसके लिए हाय नहीं बोला. So then contrasting it. Okay, कि पहले what was the prediction and what was the actual reality. So this is basically a behavioral experiment. So these are usually, obviously, then they are formed in period of engagement, goal setting, formulation, cognitive work. So
they are done after actually assessing ki, what is the problem, what is the thought, what are the goals. If the person is feeling anxious to go and talk to people, then that will be one goal, and then trying it out. So that is basically behavioral experiment. Then next is skill training. Basically, skill training is an exercise that helps to remedy skills that are deficit in the patients, and it works through modeling or direct instructions or role plays. So basically, we teach clients certain skills. For example, one is social skills training, one is assertiveness training, one is communication training. So we teach them how to do that. We do it in terms of problem solving technique कि यहाँ पे problem आ रही है तो उसको कैसे solve करें. We can do it through role play, asking the patient that you be yourself, I will be the friend. How will you come and approach me? How will you talk to me? So teaching certain skills that are lacking, that are not there in the patient. Okay. Next technique is exposure. So exposure therapy, it utilizes to treat fears and other negative emotional responses by introducing clients under carefully controlled conditions to situations that contribute to the problem. So this is very common in anxiety patients, in phobia patients. For example, if someone has a phobia of snakes, so we ask them in the session to visualize if there is a snake. If you see a picture of a snake, how will you react? Then if the snake is there in the room, how will you react? If it's there on you, how will you react? So exposing them to that feared situation. So it can be either through imagination or in vivo, that is live. Obviously, now we can't get a snake, but obviously, if they're fearing certain social situation, then probably getting a few people, asking them to talk to them. So this is in vivo, that is actually doing it. Then relaxation training, it is most effective with cognitive restructuring and exposure therapy, and it is used as a coping skill for the patient. Now depression बहुत ज़्यादा है, anxiety बहुत ज़्यादा है. So first is that we try to relax the patient, because till they don't feel relaxed, they're not going to do anything. Okay, so this helps in decreasing sleep problems, lower blood pressure, reduce worry, decrease impulsive behavior. It is majorly used in anxiety reduction, and it helps in bringing out immediate stress relief. Okay, so it can be like progressive muscle relaxation is one most commonly used for anxiety patients. There's also deep breathing, diaphragmatic breathing that is used. So it is basically focused on the physiological reaction. In the cognitive model, I had mentioned that there's a physiological reaction of the body. It helps in calming that, decreasing the worry. There is few urges to avoid situations. There is a drop in feeling of anxiety. So in this is usually the first technique that is used. Then eighth is homework. So, homework is usually an important component, and it is specific, structured, it is therapeutic, and it is usually discussed in sessions. And there are many types of homeworks that are prescribed. First is psychoeducational. So, when you are telling the patient about certain diagnosis, certain treatments, you give them certain materials to read. Okay, so they include reading materials on the symptoms, on diagnosis, etiology. Etiology is basically causes. ये आपको बीमारी क्यों हुई या क्या क्या reasons हैं. So etiology are causes. एंड ट्रीटमेंट रिलेटेड मटेरियल कि सीबीटी क्या है, कैसे यूज करते हैं, या मेडिकेशन कौन कौन सी देनी है. देन देर इज सेल्फ असेसमेंट, लाइक आई मेंशन थॉट रिकॉर्ड. अपने आप को रिकॉर्ड करना कि दीज आर माई थॉट्स, दीज आर माई बिहेवियर्स, दीज आर माई इमोशंस. Learn to identify them. Then there is third is modality specific. Certain like systematic desensitization, it is used in anxiety patients. So it is specially for
phobias basically. So that is modality specific. Yeah, OCD, obsessive compulsive disorder, may there is use of ERP, exposure and response prevention. So these are specific modalities that are used. Okay. So, and it is very important to explain the purpose of homework, otherwise, the patient will not be motivated to do that. Okay, last and the most important is relapse prevention. So, it is a strategy that is used for reducing the likelihood or severity of relapse, following the reduction in problematic behavior or cessation in the sessions. So, at the end of therapy, कि relapse ना हो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. So, when the relapse happens, then the negative thinking may come back after a long period. The patient forgets कि क्या क्या skills थे, क्या क्या techniques थी, and it relapse may occur at that time. So, when there is an initial transgression of a problem behavior after a quit attempt, first relapse is, it is called as lapse, initial transgression, and which could eventually lead to a continued transgression to a level that is similar to before quitting. So, if the patient only one episode has happened, then that is lapse. If there is repeated episodes, then it is relapse. Okay, and another possible outcome of the lapse is that the client may manage to abstain and thus continue to go forward in a positive way. So there is no relapse that has happened, everything is positive. So that is prolapse. So, basically, in relapse prevention, we identify high risk situations for the individuals to maintain a desired behavioral change. So, there are two specific aims. First is preventing an initial lapse and maintaining abstinence. And second is providing lapse management if the lapse occurs. So, first is कि lapse हो ही ना. सेकंड इज कि अगर लैप्स हो तो हम क्या कर सकते हैं ताकि वो लैप्स रिलैप्स ना बन जाए. सो दीज आर टू एम्स. सो दिस इज मेजरली कि आगे जाके व्हेन सर्टेन ऑब्वियसली वो इन्वायरमेंट तो चेंज नहीं होगी. There will be stressors in life, different situations will come up, so you cannot avoid those situations, but you shouldn't go back in your dysfunctional thinking. Okay, because when you go back to your dysfunctional thinking, then what will happen is your emotions will change, your behavioral will change, and again, full relapse will happen. So, the therapist also explores past circumstances and triggers of relapse. There may be cues that are internal, external. The client also helps to keep a current record of the thoughts, emotions, behaviors. They are taught to understand what are the warning signs of this stress or any environment that they are in, and teach them certain coping skills. So, coping skills basically relaxation techniques that they can use if there is certain stressor that has come. Teach them meditation, teach them positive self talk, teach them communication skills. So, these are certain coping skills that are taught. So, first, they need to keep a record, they need to keep their emotions, thoughts, behaviors in check, understand what are the triggers, warning signs, and then use these coping skills. So, this was basically relapse prevention. So, I have covered the major techniques also that are used in CBT. So obviously it is a very elaborate topic, but I have tried to keep it, concise so that I cover all the topics, and it is, good in actually understanding कि क्या components हैं for therapists, for psychologists, counselors to imply. There are also a lot of, self-help books on CBT that have come, that patients are aware of and they are using it also. So, this was majorly CBT. Now, I would like to take up any questions. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम ये बहुत ही शानदार था, बहुत 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 ही बढ़िया था.
टू द पॉइंट था, और आपने सीबीटी जैसे ब्रॉड टॉपिक पे आने मतलब करीब 50 मिनट में आपने बहुत कुछ कवर किया है। ऑडियंस एक बार अपने वर्ड्स में बताएगी कमेंट के माध्यम से कि कैसा रहा, रियल में फीडबैक देंगे। और हिमांशु जी पहले ही बोल चुके हैं, नाइस, काफ़ी अंडरस्टैंडेबल था, थैंक यू मैम, रे थैंक यू, नाइस इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच। भटनागर जी कह रहे हैं, वहीं पे पुष्पा देवी कह रहे हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू साहिबा जामन, ये हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। माइकल आपका भी थैंक यू है, दीक्षा खुराना थैंक यू सो मच। बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। अब वो समय आ गया है जिसमें कुछ साथी अपने क्वेश्चंस पूछना चाह रहे थे। नाउ Yes. योर क्वेश्चंस आर इनवाइटेड। आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप अपना कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। और साथ के साथ जो भी साथी, हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है मैम, यहाँ पे शुभम गौतम जी पूछ रहे हैं, मैम आई थिंक आपको कमेंट शो हो रहा होगा। Yes. Ma'am, how to make termination process more effective after problem is solved. So termination में हम basically क्या करते हैं कि हम revisit करते हैं कि क्या-क्या techniques हमने apply करी हैं during the course of treatment, कि ये आपको skill हमने सिखाया है, ये technique हमने use करी है, तो आप इसको आगे भी practice करें, keep yourself motivated, keep yourself in check, and then after we do a revision of the entire therapy, we do relapse prevention, जो लास्ट में मैंने डिस्कस किया। बेसिकली उनको सिखाते हैं कि आगे कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए, एनी स्ट्रेसर दैट यू एक्सपीरियंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द वार्निंग साइंस। ओके, इंटरनल भी हो सकते हैं, बॉडी थोड़ी लथार्जिक हो रही है, फटीग हो रहा है, मूड अच्छा नहीं रह रहा, सो दोज आर अ लिटिल वार्निंग साइंस। So understanding them and then using those skills that have been taught in therapy, coping skills. बिल्कुल बिल्कुल। और टर्मिनेशन में ये भी एहसास कराना रहता है कि थोड़ा सा मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ मैम कि जी, इट जी। वाज नॉट मी कि आपका थेरेपिस्ट ने ये सब ठीक किया है, बल्कि वो कॉन्फिडेंस देता है कि हुँ। आई एम जस्ट हियर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, नॉट आई एम गिविंग द रेडीमेड सॉल्यूशन। तो इस तरीके का फीलिंग रहता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ रहा है मैं, सरोज जी बीच में कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन्ड इंफॉर्मेटिव सेशन था। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया है, हर्षित जी पूछ रहे हैं बॉम्बे से, हाउ डज एक्सपीरियंसिंग हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस आउटसाइड ऑफ ए रिलेशनशिप इम्पैक्ट योर ability to connect with your partner? What are the typical coping? सो बेसिकली ऑब्वियसली कोई भी स्ट्रेस है, एनवायरनमेंट है, दे आर इंटर रिलेटेड, चाहे वो स्ट्रेस रिलेशनशिप का हो या किसी और चीज़ का हो, फॉर एग्जांपल वर्क, इट विल इम्पैक्ट। सो सर्टेन कोपिंग स्किल्स कैन बी इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, कि अपने पार्टनर को कम्युनिकेट कीजिए हाउ यू आर फीलिंग, ट्राई टू गेट देयर सपोर्ट, सोशल सपोर्ट इज वन coping skill, then stress management techniques, relaxation techniques. These are certain coping skills that are used, to connect with your partner, communicate with your partner, and also at the same time manage your own stress. Okay, so these are certain coping mechanisms. राइट राइट राइट। यहीं पे साना उल्ला जी वेरी इंफॉर्मेटिव बता रहे हैं। वहीं पे एक और इंफॉर्मेटिव सेशन का कमेंट है, माइकल जी बोल रहे हैं, इंसाइटफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग सेशन इन द सीबीटी ऑन सीबीटी। हिबा फातिमा वेरी गुड एंड इंफॉर्मेटिव सेशन। मैम मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास इंडिया से ही नहीं बल्कि हमारे इस चैनल को करीब 20 से ज़्यादा कंट्री के लोग देखते हैं। यहाँ पे तरुण नागपाल जी, हेलो एवरीवन, हेलो तरुण सर, हाउ आर यू डूइंग। ये एक हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं, बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे प्रिय मित्र हमें सुन रहे हैं। राघवेंद्र जी कह रहे हैं सीबीटी इज वेरी हेल्पफुल फॉर ह्यूमन माइंड्स काइंड्स। निधि जी नाइस बता रहे हैं। वहीं पे एक क्वेश्चन आ गया हमें, दैट जी। इज what to do if patient is inconsistent during the therapy and non-cooperative during the therapy? Please ma'am. ये एक्चुअली बहुत मेजर प्रॉब्लम है, दैट द पेशेंट इज़ इनकंसिस्टेंट एंड नॉन कोऑपरेटिव। एक रीज़न मेजरली उनकी साइकोपैथोलॉजी रिलेटेड है। उनका जो प्रॉब्लम है, फॉर एग्ज़ाम्पल डिप्रेशन, उससे रिलेटेड है। अगर वो
पेशेंट उठ ही नहीं पा रहा बेड से, तो वो कैसे कंसिस्टेंट रह सकता है थेरेपी में? सो व्हाट टू डू एट दैट टाइम इज कि डिस्कस दिस विद द पेशेंट। ओके, अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज ही इनकंसिस्टेंट or non-cooperative during therapy, what are the reasons behind it, and communicate it with the patient. Also find out different alternative ways. So क्या था कि मेरे एक पेशेंट ने थॉट रिकॉर्ड, ही वाज नॉट एबल टू मेंटेन इट बिकॉज ऑब्वियसली सिवियर डिप्रेशन था, नहीं उठा जा रहा, वो कैसे लिखेगा? But what was his one way is that he used to talk to other people. So what I told him कि ठीक है, if you're not able to write it down, not able to maintain the thought record, then you can record it in your phone. Voice notes बना लो, ठीक है, and then we can play it in the therapy. I can pick out the automatic thoughts and then we can proceed with cognitive restructuring. So always find out the reason and some alternative way to deal with it. अगर वो That कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग नहीं कर रहा, उसको रिलैक्सेशन की जरूरत है, एंजाइटी बहुत हाई है, गो विद दैट टेक्निक फर्स्ट। ग्रेट। ये बिल्कुल सही बात है, टू द पॉइंट दैट डोंट बी अ जजमेंटल पर्सन, बल्कि आप सीधा ये ढूंढिए कि रियल कोज या उसका रीजन क्या है कि वो रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं। और बहुत बार जी। जेन्युइन रीजंस ही रहते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत बार ऐसा होता है कि उनके जेन्युइन रीजन है। शुभम गौतम जी थैंक यू बोल रहे हैं मैम आपको। सविता शर्मा जी वेरी इंफॉर्मेटिव मैम। यहाँ पे सर्टिफिकेट का लिंक जस्ट हम विद इन सम मिनट्स हम पब्लिश करने वाले हैं, डोंट वरी। और ये डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा हमेशा, ऐसा कोई इशू नहीं है। हर्षित जी थैंक यू बोल रहे हैं आपको बॉम्बे से मैम। समिता जी कह रहे हैं वांट मोर लाइक दिस। श्योर। सविता शर्मा जी डेफिनेटली। कह रहे हैं प्लीज शेयर द पीपीटी। जी बहुत सारे यहाँ पे। माइकल जी पूछ रहे हैं कैन आई गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन? यस, ये सेम लिंक यूट्यूब पे ही हमारे पर्सनालिटी केयर फाउंडेशन पे लाइव ही रहेगा, तो ये अपने आप ही रिकॉर्डिंग बन जाता है, आप वहां से कभी भी देख सकते हैं, उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। हिमांशु जी कह रहे हैं वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पे साना उला जी ये पूछना चाह रहे हैं मैम, मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, जस्ट वांट टू आस्क अबाउट दैट हाउ कैन वी नो वेदर हाउ मच इफेक्टिव वाज आवर थेरेपी? यस प्लीज। सो दिस इज सीपीटी एक्चुअली इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है बिकॉज सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट विद द सीबीटी थेरेपी, सो व्हाट वी डू इज वी फॉर्मुलेट गोल्स, गोल्स शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी, कि क्या अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आई वॉन्ट टू improve in my studies, I want to concentrate better, yeah, any goal related to the patient, and at each interval, not only at the end but बीच बीच में भी हम वो goals revisit करते हैं कि कितना progress हुआ है। इट कैन ऑल्सो बी डन थ्रू असेसमेंट्स कि पहले कितना डिप्रेशन था, क्या सिवेरिटी थी, एंड अब थोड़ा अगर लेवल कम हुआ है। सो बट जो गोल्स रिविजिट करके रीइवैल्यूएट करके हम पता कर सकते हैं कि थेरेपी इफेक्टिव जा रही है, हम गोल्स की साइड जा रहे हैं, हमने वो अचीव कितने गोल्स कर लिए हैं। अगर हमने 5 गोल्स बनाए थे, हमने 2 अचीव कर लिए हैं, तो इट इज इफेक्टिव। मतलब कितना इम्प्रूव कर रहा है क्लाइंट। सो दीज आर द वेज वी कैन नो इफ इट इज इफेक्टिव और नॉट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार है ये। और मैम एक आखिरी क्वेश्चन हम और ले रहे हैं। हाँ, ये ओके। बिल्कुल आखिरी ही है, वैसे तो 8:05 हो गया है। बहुत सारे साथी अभी भी यहाँ पे हमारे साथ लाइव हैं। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि यदि रियली ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप हमें थोड़ा सा मदद कर सकते हैं। और मदद के लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, कोई जीएसटी इस पे नहीं लगता। हमें सपोर्ट से अच्छा लगता है, हम और आज ज़्यादा काम कर पाते हैं। इसी के साथ हम एक आखिरी क्वेश्चन आज के लिए ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, खैर हम किसी दूसरे दिन इन पे बात करेंगे। यहाँ पे साक्षी जैन जानना चाह रही है मैम, where do we these kind of practically currently I am in my final year of BSc honors। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं कि आपको शो हो रहा है मैम कमेंट?
जी, 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 जी। जी प्लीज़। सो यूजुअली क्या होता है कि लाइक कोर्सेज़ में इट इज़ मोर थ्योरेटिकल। वो थ्योरीज़ ही समझाएँगे, वो टेक्निक्स ही करेंगे, बट यू कैन टेक अप सम इंटर्नशिप। आई थिंक मास्टर्स में डेफ़िनिटली इंटर्नशिप का पूरा टाइम फ्रेम होता है दैट यू हैव टू डू, बट इफ यू आर ईगर टू लर्न इवन इन bachelor's, then you can take up certain 1 month internship पेशेंट्स के साथ, ऑब्वियसली आप नहीं कर पाओगे थेरेपी, बट यू कैन ऑब्जर्व अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या अ काउंसलर डूइंग दोज़ थेरेपीज़, तो समझ आएगा, टिल यू डोंट एक्चुअली सी दैट हैपन, कैसे वो थेरेपिस्ट फ्रेम कर रहा है क्वेश्चंस, कैसे वो पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है, यू विल नॉट लर्न। सो देयर आर डिफरेंट, ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन इवन बेटर, बट यू कैन टेक अप सर्टेन इंटर्नशिप्स। बिल्कुल, बिल्कुल। आप पर्सनैलिटी केयर फाउंडेशन के साथ भी इंटर्नशिप प्रोग्राम जॉइन कर सकते हैं। मैम भी खुद प्रैक्टिस करते हैं उधर भी। जी, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कीजिए उनके साथ कनेक्ट करें। उनसे इंटर्नशिप ना करें जो सिर्फ़ थ्योरी और इस इन सब चीज़ों को एक क्लास के रूप में देखते हैं। या, उसके तो पेशेंट का इंटरवेंशन कैसे रेपो बिल्ड करना है, कैसे थेरेपी करना तो आगे का स्टेप है। पहले ये है कि वो बेसिक्स आपको हैं क्या? आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल कैसी है? कई बार आज के दिन तो इतना स्टिग्मा नहीं रहा चीज़ों का, लेकिन अभी फिर भी कुछ क्लाइंट्स इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करते कि साथ में इंटर्न्स बैठें, बट बहुत बार चीज़ें हेल्पफुल हो जाती हैं। या, तो आप उस तरीके से अपनी चीज़ों को प्रोसीड कर सकते हैं। हम बहुत जल्द कुछ नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। तब तक आपने इतनी देर तक हमारे साथ कनेक्ट रहे हैं। मैं पर्सनली हमारे आज के रिसोर्स पर्सन का बहुत-बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगा। उन्होंने वास्तव में बहुत ऐसी चीज़ें जो शायद पे करने के बाद भी आपको नहीं मिलती, वो सब चीज़ें भी बड़े अच्छे से शेयर की हैं। मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप से ऐसा समझता हूँ कि इन सब चीज़ों के लिए लोग वेबिनार करते हैं और 2-2 3-3 5-5 हज़ार रुपए फीस भी लेते हैं और तो भी इतना टू द पॉइंट चीज़ें नहीं मिलती। तो मैम मैं आपका बहुत-बहुत ही ज़्यादा थैंक यू करता हूँ। आप सब लोग भी बता के जाइएगा कि सेशन कैसा लगा। मैम आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप कुछ कहना चाहें हमारी ऑडियंस के लिए एक आखिरी मैसेज? थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स, ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आपने इतनी पेशेंटली सुना। थैंक यू फॉर ऑल योर मैसेजेस, ऑल योर क्वेश्चंस, ऑल योर कमेंट्स। काफ़ी मोटिवेटिंग रहा वो, एंड थैंक यू टू पर्सनैलिटी केयर फाउंडेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बहुत जल्द हम किसी और विषय पे चाहेंगे कि आपको समय रहे तो आप प्लीज़ हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट कीजिएगा। बहुत जल्द हम आपसे मुलाकात करेंगे और थैंक यू सो मच। अभी मैं ऑडियंस को भी कहना चाहूँगा कि जो भी साथी आज के इस वेबिनार में काफ़ी समय से लगातार बने रहे हैं, थोड़ी देर भी रहे हैं, मैं आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। कैसा लगा ये सेशन आप ज़रूर बता के जाइएगा। मैं आपको याद दिला दूँ इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में ही आपको सर्टिफिकेट का लिंक मिल गया है। आप हमें मदद करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन से ही कंट्रीब्यूशन या डोनेट कर सकते हैं और ऐसा नहीं करेंगे तो भी हम इस तरीके के सेशन लगातार आपके बीच में लाते रहेंगे। इसके पीछे वजह है कि हम क्वालिटी पे थोड़ा काम कर पाएँ। खैर, इसी के साथ हमारी फ्री मेंबरशिप भी आप लोग ले सकते हैं। आप लोग ज़रूर आज की सेशन से कुछ न कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा। सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आज के दिन बहुत ज़्यादा थेरेपिस्ट लोग यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपने ज़रूर कुछ न कुछ ज़रूर अपने जीवन में आज नई चीज़ ऐड करेंगे, ना सिर्फ़ अप्लाई करेंगे, दूसरे लोगों को सप्लाई भी करेंगे। आपको ये सेशन अच्छा लगा तो दूसरे लोगों तक भी आप इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। हमें अच्छा लगेगा कि आप इन सब चीज़ों को लेके हमारे साथ लगातार बने रहे हैं। मैं आपका बहुत-बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बाँटते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जल्द ही मिलेंगे किसी दूसरे सेशन में, तब तक के लिए नमस्ते जी।